In today's lecture, we are going to start our circulatory system from your anatomy physiology. So we'll discuss in very short about the circulatory system in your anatomy physiology. See, if you see the previous year papers, last 2 or 3 years papers, they have been asking consistently 2 or 3 questions from this circulatory system, and they are mostly focusing on the area where types of different types of shocks like hypovolemic shock, then septic shock, etc., etc. Hypovolemic shock, cardiogenic shock, etc. Then again they asked one question from your cardiac cycle also. There was a question in the cardiac cycle on a cardiac cycle. So we will see what do you mean by cardiac output and what are the basic principles. Because see, in this circulatory system, एज पर एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसर्न, ये आपको 2-3 बार हो चुका है, फिर भी अपन थोड़े से क्विक में इसका रिव्यू जो वो जितना रिव्यू बनता है उसका एकदम शॉर्ट में वो ले लेंगे फ्रॉम एनाटॉमी फिजियोलॉजी. एंड आफ्टर दिस पार्ट वी विल स्टार्ट एंटी एरिथमिक ड्रग फ्रॉम फार्माकोलॉजी. After that we will see anti-hypertensive drugs. Okay, so circulatory system, it is one of the most important system of your body which used to circulate the blood to your other organs. Okay, circulatory system consists of 3 parts: your blood, then your pumping system, and your blood vessels. Okay, so these 3 parts, they work in a coordination to circulate the blood along with nutrition, energy, vitamins and all that. So whatever growth factors are required, whatever energy is required to every tissue along with gases also. So blood is a fluid connective tissue, that is a connecting link between circulatory system and your peripheral organs like tissues and all that. Okay, so circulatory system consists of 3 parts majorly: your blood, then your blood vessels, and your heart, that is pumping system. Heart is nothing but the pumping system. Okay, so it is one of the most important, and from last few years they are consistently asking the question from this. Okay, actually if you talk about the circulatory system, so there are different kind of circulation. So first one is a systemic circulation, second one is a pulmonary circulation, third one is a portal circulation. Okay, so we'll see one by one what do you mean by systemic circulation. Okay, so systemic circulation means circulation of blood from heart to the various part of your body. Okay, various part of your body, it's like tissue, organs. For example, if your blood is circulating from your heart, blood is pumping through heart to a kidney, that is comes under the systemic circulation. Okay, so it is also known as a major circulation. So there are principally 3 types of circulation: systemic circulation, which is also known as major circulation. And what is the role of this circulation? The circulation is important for other body tissues. Okay, so they are getting nutrition, they are getting fresh blood, they are getting gases like oxygen and all that. So major circulation is mostly to the other tissues. Okay, then second one is a pulmonary circulation. Pulmonary circulation, or it is also known as minor circulation, remember. So it is known as a minor circulation. And pulmonary circulation means what? The pumping of blood, that is a deoxygenated blood, mainly pumping out deoxygenated blood to the lungs. And over there in the lungs there will be purification of blood, there will be exchange of gases in the blood, exchange of gases in the lungs, particularly the alveoli part of lung. Okay, so there will be exchange of carbon dioxide to the oxygen in the alveoli part of lung, and again that impure blood or deoxygenated blood will be purified or oxygenated in the lung, and that will come again into a heart. So that kind of circulation is known as a pulmonary circulation. First one was a major circulation or systemic circulation, that is the circulation of blood from heart to a various body part, except so various body part from the heart, various tissues, organs from the heart, that is a major circulation, systemic circulation. So that is main aim for major circulation is to provide a nutrient to extract the whatever toxic metabolites are there, and exchange of gases. Okay, so that is the systemic circulation. Then pulmonary circulation, so here the pulmonary circulation means it is known as a minor circulation, and the aim of this minor circulation is nothing but the to purify the blood, to oxygenate the blood. Okay, so here
in the lungs, alveoli part of your lungs, that is a major site for the gaseous exchange. Okay, so different gases like carbon dioxide will be released and oxygen will be concentrated in the blood using that alveoli in the lungs. Okay, so those circulation, that circulation is nothing but the minor circulation or pulmonary circulation. There is another one type known as a portal circulation. Okay, so your around your yes, 40 to 55, 40 to 45% of your blood from whatever blood is ejected from your heart, 40 to 45% of ejected blood from heart, that goes into a GIT, that goes into a area of GIT. So whatever your gastrointestinal tract is there, आपका जो GIT का ट्रैक्ट है, जैसे आपका GIT स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे जो ब्लड होता है, वहां पे जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. ओके, सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ए योर डाइजेस्टिव एरिया, so that is nothing but the portal circulation. Okay, so around 40 to 45% of your blood that goes directly to a portal circulation, and remaining 40-45% goes to different organs. Okay, so mostly that kidney portal circulation is most of the blood goes to the portal circulation. Then after that your again remaining 30 to 35% blood goes to a kidney, and remaining 1 to 10%, that is 1 to 10% goes into the your skin. Okay, so most of the blood whatever circulated is going to your digestive area, then after that kidney, and after that rest of the organs. Okay, so just remember this. Then what do you mean by portal circulation? That is the circulation of venous blood from intestinal and your GIT part to a portal vein. That is nothing but the portal circulation. Okay, so just try to remember systemic circulation, pulmonary circulation, and portal circulation. Now okay, as I have told you, there are three parts of your circulatory system: your blood vessels, your pumping system, that is heart, and your blood. Okay, so now you might have seen this blood vessel and all that you have studied in the 12th as well as in the first year of your B.Pharm. But still I just want to highlight what is important. So there are two major types of blood vessel in the body. First one is the artery and second one is the vein. Okay, so what is the basic difference between arteries and vein? So remember, artery will carry blood from heart to the other part of the body. Okay, means arteries will carry blood away from the heart. Okay, arteries will carry blood away from the heart. Okay, second, okay, so vein will carry blood from tissue to the heart. Okay, so arteries will carry blood from heart to the other tissues, and veins will carry blood from tissues to the heart. Okay, remember first difference. Second difference, artery has a oxygenated blood. Okay, artery has a oxygenated blood, that means pure blood. Okay, so oxygenated blood or pure blood is supplied to a various tissue by artery. Okay, then impure blood means deoxygenated blood. इम्प्योर वर्ड बोलना उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली उतना ये नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, दैट विल बी कलेक्टेड बाय वेन्स. ओके, दैट विल बी कलेक्टेड बाय वेन्स. दे विल जॉइन टू अ मेन वेन, दैट इज अ मेन वेन, एंड देन अगेन they will drain their content into the heart. Okay, so that is a vein. Then again there are structural difference. So every blood vessel is made up of three parts. The outer part will be your fibrous tissue. Outer part will be your fibrous tissue. Okay, that is a tunica intima. Sorry, that is a tunica externa. That is the outer part. That is nothing but the fibrous tissue, made up of fibrous tissue like collagen. Okay, so outer part of blood vessel is nothing but the tunica externa, that is made up of fibrous tissue, that for example collagen. Okay, then second layer of blood vessel consists of your muscular layer. Okay, so muscular layer means it will have a smooth muscles. Okay, and some part of elastic fibers also will be there. This smooth muscle will be arranged in a circular manner in the middle layer of the vein. Okay, so this layer is very important because this layer controls the calibri of your blood vessel, because
ये जो मिडल वाला लेयर होता है जैसे मस्कुलर लेयर, तो ये मस्कुलर लेयर में वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, जैसे आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर हो गया, ठीक है, ये रिसेप्टर होते हैं। और ये जो मस्कुलर लेयर है वो दैट विल कंट्रोल द इलास्टिसिटी or that will control the lumen of your blood vessel. Okay, whether it is a vein or artery, it doesn't matter, but it will control uh, the lumen of your blood vessel. Okay, so that's why this middle layer is very important. And then inner layer, that is known as the tunica intima, that is made of endothelium and subendothelial layer. So this is also very important because this layer is directly coming in contact with the blood. Again, this layer is similar layer like inner layer of heart. Okay, जो हार्ट का इनर लेयर होता है और ये ब्लड वेसल का इनर लेयर लिटिल बिट सिमिलर ही होता है वो, ठीक है। सो इतना याद रखो कि हार्ट जो ब्लड वेसल है उसके जो मिडल लेयर होता है वो मस्कुलर होता है, उसमें स्मूथ मसल होता है, एंड दैट यूज टू कंट्रोल द कैलिबर ऑफ ब्लड वेसल, कितना कॉम्प्रेस रहना है, कितना रिलैक्स होना है, वो कौन कंट्रोल करता है? मिडल लेयर कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आउटर लेयर फाइब्रस टिश्यू का होता है, इलास्टिक टिश्यू का होता है, मिडल लेयर मस्कुलर होता है, और इनर लेयर क्या, इनर लेयर में एंडोथेलियम लाइनिंग होता है उसका, ठीक है। सो अगेन डिफरेंस मैंने बोला है कि आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। नाउ देयर इज अ, if you see the difference, the middle layer, about the middle layer, okay, the muscular layer. So muscular layer is very thick in case of arteries. So artery में जो muscular layer होता है वो बड़ा होता है, thick होता है, जाड़ा होता है, ठीक है। जो veins होते हैं उसमें वो muscular layer जो है वो कम होता है, ठीक है। You can see tunica media, okay, here you can see it is a thick, and you can see here it is a very thin. Why it is so? Because see, arteries are arteries must withstand with a high pressure. That's why they are having a large thick wall of smooth muscle. कि उनका आर्टरी में जो है स्मूथ मसल का वॉल ज्यादा होता है क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है। वेन्स का क्या है, वेन्स का प्रेशर नहीं है उतना, वेन में है लेकिन उतना नहीं है प्रेशर। वेन का काम क्या है, टू कलेक्ट द ब्लड, वो ब्लड कलेक्ट करेंगे वेरियस टिश्यू से और हार्ट को देंगे। और आर्टरीज का काम क्या है कि ब्लड हार्ट से सप्लाई करना वेरियस टिश्यू को। तो आर्टरी का ज्यादा काम होता है, उसमें ज्यादा स्मूथ मसल्स होता है लेयर जो, क्योंकि उसको प्रेशर के लिए विथस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक डिफरेंस होता है आपका कि योर वेन्स कंसिस्ट ऑफ वाल्व्स, योर वेन्स कंसिस्ट ऑफ वाल्व, वाल्व होता है वेन्स में, आपके आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है। सो देर इज नो वाल्व इन द आर्टरी, देर आर वाल्व इन द वेन। व्हाई? बिकॉज वेन हैज टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम वेरियस टिश्यूज and it has to travel above the gravity. Okay, it has to travel, the blood has to travel above the gravity, and the valves will prevent a backflow of blood from the veins. That's why veins are provided with the various kind of valves, and arteries are not provided with the various kinds of valve. But artery has a thick middle layer as compared to vein. Vein has a thin middle layer. Okay, and again artery carries oxygenated blood, veins carries deoxygenated blood, but there is a one exception, pulmonary artery. Pulmonary artery will carry deoxygenated blood and pulmonary vein will carry oxygenated blood. So there is a just one exception over there. Just it is just a basic things. You have already studied it, that, but still you have to remember it. Okay. Then again arteries and veins. See, these blood vessels, they are very elastic, they are very rough at the near the heart, and they are very elastic at the peripheral part. कि जो वेन्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं जो नियर है, मतलब जो आपके दिल के करीब है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, लेकिन जो आपके बॉडी के पार्ट के पेरिफेरल में है, जैसे आपके स्किन की तरफ है या लीवर की तरफ है, या जो जैसे जैसे ब्लड वेसल दूर जाएगा हार्ट से वैसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा उसका। जैसे ही ज्यादा हार्ट के नजदीक आएगा कौन सा ब्लड वेसल हो, उसका क्या होगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी कम होगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल विल डिक्रीज इफ इट इज कमिंग टू द हार्ट, एंड इफ it is going away from the heart, the blood vessel will be elastic enough. Okay, so that is the just a basic difference. Now, okay, so again left side of your heart consists of
left side of your heart consists of oxygenated blood and right side of your heart consists of deoxygenated blood. Remember, okay? दाएं साइड कौन सा है, बाएं साइड को कौन सा ब्लड होता है, ठीक है? Now, so difference between arteries and veins, I think I already covered it. So artery will carry oxygenated blood except pulmonary artery, and they move the blood away from the heart. Okay, and they have to withstand, we usually with high pressure. Okay, so arteries usually they have to carry blood to the other body parts with the high pressure. Okay, they have a thick walled and deeply seated. इसमें आर्टरीज में क्या होता है, जो मिडल मस्कुलर लेयर तो वो थोड़ा सा थिक होता है, और ये आर्टरीज सुपरफिशियली नहीं होते, वो डीप होते हैं, डीप टिश्यू में होते हैं, ठीक है. एंड वॉल्व्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आर्टरीज. देन अगेन, ओके, दिस आर्टरीज विल शो पल्स फ्लो. पल्स फ्लो, इसमें पल्स फ्लो होता है आर्टरीज में. आर्टरीज विल शो पल्स फ्लो. अगर आपका आर्टरी कट गया तो आपका कंटिन्यूसली ब्लड लॉस नहीं होगा. ऐसा ब्लड मतलब पल्स होता है, जैसा आपको एक स्ट्रोक में ब्लड आएगा, फिर दूसरे स्ट्रोक के लिए रुकेगा, फिर तीसरे स्ट्रोक में फिर से ब्लड आएगा, मतलब पल्सेटाइल फ्लो होता है. आर्टरीज का फ्लो पल्सेटाइल होता है. अगर आपका आर्टरी में कट हो गया तो योर ब्लड विल बी blood will be loose in a pulsatile flow. So that is a basic difference. Okay, but in case of vein, you will not have a pulsatile flow, you will have a smooth flow of blood. ठीक है, दोनों में भी ब्लड लॉस हो गए तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है. यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोवॉल्यूमिया. बट इन केस ऑफ आर्टरी, you can easily identify the artery or vein, क्या कट हुआ है आपका. So you can easily identify whether it is artery or vein, what is cut, where is cut. Okay, so if you are seeing a pulsatile flow, that means the arteries are involved in the injury. Okay, जहाँ पे इंजरी है वो आर्टरीज को हुई. अगर स्मूथ फ्लो है, that means the veins are injured. Okay, again vein carry deoxygenated blood towards the heart. Okay, except pulmonary vein. अभी पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेगा किसको, हार्ट को. पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, that will carry deoxygenated blood to lung, because lung is the medium to purify the deoxygenated and oxygenated. वहां पे लंग्स में क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा. अगेन वेन्स में क्या होता है, veins will have valves, okay, and they will have smooth flow. Again they will have very thin muscular layer in their middle layer. Okay, so just remember the difference. Now the blood vessel diameter. Okay, so diameter of this blood vessel, it can be controlled, it is controlled by two systems, that is the vasomotor center in the medulla oblongata. Okay, so whatever middle layer is there, muscular layer, so that is controlled by a autonomic nervous system. Okay, that is controlled by vasomotor center. Okay, and they are innervated by different autonomic system, either sympathetic or parasympathetic. ठीक है, मैंने बोला था आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर स्टिमुलेट हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. क्यों, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है. क्यों, क्योंकि नॉरएड्रेनालिन का रिसेप्टर होता है अल्फा ब्लड वेसल पे, वो कंस्ट्रिक्ट करेगा. ठीक है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पास ऐसा. सो अगेन वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी सप्लाई होता है, वो उसको डायलेट करेगा. ठीक है, ऐसा. Then the release of metabolic waste like carbon dioxide, lactic acid also increases the blood into the tissue area. So if there is a metabolic disturbances, that is if there is a hypoxia, if there is a acidosis, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया आपके बॉडी में तो वहां पे, और लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ गया तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा उस टिश्यू में. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका लीवर है, लीवर में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, मतलब वहां पे क्या है, वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है. ठीक है, मतलब वहां पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो वहां पे ब्लड ज्यादा रहेगा. ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड इन द एरिया वेयर देयर इज मेटाबॉलिज्म इज हाई. ओके, देन अगेन हाइपोक्सिया स्टिमुलेट द vasodilation and increases the blood flow in the affected tissue. Temperature also result in the increase in the vasodilation, and temperature also raises the blood pressure. So blood supply to the skeletal muscle will increase as much as 24 during heavy exercise. So anybody is engaged in the heavy exercise, so the blood vessel which supply the muscle, that blood supply will be increased as much as double. Then exchange of gases in the tissue takes place by
diffusion. Okay, so whatever exchange of gases are there, for example, uh, if your blood has a carbon dioxide, that will be diffused inside the alveoli of your lung, and again whatever oxygen is present in there, that will be again diffused inside the blood. Okay, in the alveoli, that is the the exchange of gases takes place by diffusion. Okay, because of the difference in the partial pressure. Okay, रिमेम्बर ये एक बार क्वेश्चन आया था, इसके बाद पल्स फ्लो और स्मूथ फ्लो जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. So what is weight of your heart? So in the woman it will have around 2 to 5 gram, and in the man it will have 3 110. 310 ग्राम में 310 ग्राम वेट होता है आदमी में, और लेडीज में कितना होता है 225 ग्राम. ठीक है, उसके बाद इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आदमी का मतलब उनका कठोर दिल वाले होते हैं लोग. जो मेंस होते हैं दे विल बी हार्ड. Your heart is divided, heart is covered by 3 layers. Okay, your heart is covered by 3 layers, and heart is known as a pump of your body. Which is your what is your pump of you, which is your what is your pump of your body? That is nothing but the heart. Heart is a pump, it is a hollow muscular organ. Okay, आप उसका कहाँ पे लोकेशन वो सब आपको 12th में हो चुका है, फिर भी आप it is located in the thoracic cavity just below the sternum. Okay, it is inclined to left side about 10 सेंटीमीटर, ये सब आपका हो चुका है. उसके बाद में इट इज जस्ट अबाउट द स्टर्नम, इट इज जस्ट अबाउट द पेरिटोनियम. जो पेरिटोनियम कैविटी होता है, पेरिटोनियम जो होता है उसके ऊपर होता है हार्ट. नाउ हार्ट इज कवर्ड बाय 3 parts. Outer one is known as a pericardium. Outer one elastic sac is there. Outer one elastic sac. Sac means 2 layer. So there will be 2 layer of pericardium. Okay, there will be 2 layer of pericardium. That is outermost layer covering on the heart. Okay, outermost covering on the heart is nothing but the pericardium. It has 2 layers, and in between these 2 layers there is one fluid known as a pericardial fluid. Okay, so outer layer which protect the heart from over distension. Okay, in these 2 layers there is a pericardial fluid, or pericardial fluid, that is a lubricant of heart. Okay, सो जैसे डिस्टेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे आपके हार्ट का होता है, तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना, ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ओवर डिस्टेंशन ना हो. सो एंड अगेन दैट इज प्रिवेंटेड बाय lubricant known as a pericardial fluid. Again, this pericardial fluid will prevent a shock. Prevent it will act as a adsorbent of shock absorbent. Okay, जो भी हार्ट के ऊपर शॉक आ जाएगा तो वो पेरिकार्डियल फ्लूइड एब्सॉर्ब कर लेगा उसको, फिर हार्ट को प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो इट इज सिक्रेटेड बाय दिस serous membrane which is the inner layer of fibrous pericardium. So pericardium is outermost layer, it is like a sac. Okay, it is having 2 layers, and in between 2 layers there is a cavity known as and that cavity is filled up with the fluid known as a pericardial fluid, which is secreted by serous membrane of pericardium. Okay, and that is outermost layer. Now middle layer is nothing but the muscular layer, and that is known as a myocardium. Okay, myocardium. Okay, it is a middle smooth muscular layer. Okay, so that muscle is not under voluntary control. You cannot control the myocardium of your heart. आपने बोला कि नहीं यार मेरा दिल आपके लिए बहुत धड़कता है, ठीक है, मतलब आप मेरा दिल आपके लिए धड़कता है, मतलब ऐसा नहीं है, वो उसके लिए नहीं धड़कता, वो आप ही के लिए धड़कता है. ठीक है, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, so muscular layer is nothing but it is involuntary. Okay, it is not under voluntary control, it is involuntary, it has some sort of autonomy, and that's why heart, एक बार आपका हार्ट चालू हो गया, मतलब नॉर्मली व्हाट हैपेंस 24 वीक्स ऑफ योर प्रेगनेंसी, जो 24 वीक्स का प्रेगनेंसी होता है उसमें, सॉरी जो 12 वीक्स का प्रेगनेंसी होता है उसमें जो बनता है जो बनता है उसमें ही एक बार हार्ट चालू होता है उस टाइम पे. ओके, उस टाइम पे हार्ट चालू होगा, तो आप जब तक मरते नहीं हो तब तक आपका हार्ट चालू ही रहता है. ठीक है, तो किसी के लिए मतलब बोलते हैं ना मेरा दिल आपके पास है, तो आपके पास वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, वो बोलने की बात है. हार्ट विल once heart will start beating, it will not stop until your death. Okay, so myocardium is a middle layer of your heart, and it is having smooth muscle, it has some sort of an autonomy. Okay, and yes, definitely it has some sort of autonomy, it used to contract and relax by its own. It is under the
it is not under the control of your brain, okay, but brain will influence the myocardium. Brain can influence the myocardium, means myocardium किसी के किसी का सुनता नहीं, वो खुद की चल रहा है, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी कोई बंदा है, कोई किसी का सुनता ही नहीं हो, तो उसको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, ठीक है, तो वो उसको भड़का देंगे या फिर उसको भड़का देंगे, ऐसा रहता है। सो myocardium is not under the control of voluntary, it is not under voluntary control, it is involuntary muscle, and sorry, yeah, it is involuntary muscle, it has some sort of autonomy, and it will okay, so it will go spontaneous contraction and relaxation. So in upcoming slide I will show you how it will go it will continue contraction and relaxation, okay. Then again this myocardium will secrete one peptide known as a natriuretic peptide, okay. एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, what is the middle layer of your myocardium. Then inner layer of your heart is nothing but the endocardium, okay. So it consists of an endothelial layer, okay, just like your largest vein in the body. Which one is the largest vein? Your inferior vena cava is the largest vein, okay. So these two are the largest veins, superior vena cava and inferior vena cava. But in comparison, अगर आपने दोनों में से देखो तो inferior vena cava जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है. So largest vein is inferior vena cava. And what is largest artery? Largest artery is nothing but the your aorta. Aorta is the largest artery. Remember, there is a SA node. SA node is known as a pacemaker. Okay, it is SA node is known as a pacemaker. SA means sinoatrial node, and it is the area. It is the area electrical. It is a muscular area where there will be generation of electrical impulse. Where there will be generation of electrical impulse, there will be spontaneous depolarization over this area known as the SA node. It is located in the atrium, okay, just to the right atrium. I will show you, okay. So it will generate a impulse, it will control your heartbeat, okay. So it will generate impulse, and it will generate around 60 to 80 impulse per minute. 60 to 80 impulse per minute is generated by SA node, and SA node is known as a pacemaker of heart. ये क्या था? Now AV node, after that AV node is there. It is known as atrioventricular node. It is present in the just atrioventricular septum of heart, okay. Now it is also having the capacity to undergo spontaneous depolarization, but it will undergo spontaneous depolarization to a lower rate as compared to your SA node. इसमें भी impulse generation करने का, impulse conduction करने का ये कैपेसिटी होता है, लेकिन ये क्या करता है, स्लोअर रेट से जनरेट करता है impulse than the SA node. तो ultimately SA node will control or SA node will decide your heartbeat, okay. Is that clear? ये क्यों होता है मैं बोलता हूँ. SA node में क्या होता है, जो SA node में जो मसल होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, so they has a specialized cell, muscle cells, and it has a negative potential inside the cell. So as मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स में होता है -75 मिलीवोल्ट, राइट. सो बट यहाँ पे उतना नहीं होगा. तो योर मायोकार्ड, ये जो SA नोड है, वहाँ पे क्या कितना होता है, वहाँ पे होता है -55 मिलीवोल्ट. -55 मिलीवोल्ट का यहाँ पे ये होता है, क्या होता है, negative potential होता है inside the cell. Now what happens? So suppose that a sodium enters in the cell, okay. So vast type of sodium channels are there. So that sodium will enter in the cell. There will be rapid depolarization, and depolarization will be there. So that is nothing but वो बाद में बोलता हूँ मैं आपको what is ECG and all that, कि phases क्या है different polarization. तो वो सोडियम अंदर जाएगा, उसके बाद में depolarization हो जाएगा, और बाद में थोड़ा सा depolarization लॉन्ग लेके जाता है उसको, बाद में कैल्शियम आयन भी अंदर जाता है, बाद में उसका repolarization होता है, ऐसा. तो SA node is able to generate the impulse, and it will generate an impulse around 60 to 80 per minute. Then AV node is also able to generate the impulse, but it will generate at a lesser rate than SA node, okay. So AV node will generate 60 to 40 beats per minute, okay. Then vagus nerve is supplied to SA node, AV node. Stimulation resulting in decrease in the heart rate and force of contraction. Vagus nerve is supplied. Vagus nerve means what? It is a mostly innervated by acetylcholine, means that is a cholinergic nerve, okay. And you know that cholinergic will be depress your heart, so heart rate will be depressed, SA node will
force of contraction will be decreased. Just to remember this. Now cardiac cycle, what do you mean by cardiac cycle? So whatever sequence of heart is there, okay, whatever electrical sequence of heart is there, so that is nothing but the cardiac cycle. So it comprises of 0.8 second, 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है. उसमें आर्टियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का, एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड का. इसके ऊपर जीपैट 21 में एक क्वेश्चन आया था. एक्चुअली सभी बुक्स में इतना ही दिया है, 0.1 कार्डियक साइकिल होता है आपका 0.1 0.8 सेकंड का. सो एवरी बुक हैज मेंशन्ड कार्डियक साइकिल इज अ 0.8 सेकंड एंड आर्टियल सिस्टोल लिया हुआ 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकंड. बट जीपैट 21 में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा अलग था. उन्होंने बहुत ही अलग वैल्यू दिया था. वो भी मैंने वो निकाल के लिख रखा है यार, वो भी बोलूंगा. सो just remember cardiac cycle, that is nothing but the electrical event going on the your electrical and event going on the heart, that is 0.8 second. Each cardiac cycle will complete in a 0.8 second. So out of that arterial systole means आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो 0.1 सेकंड में होगा. उसके बाद में जो वेंट्रिकल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो 0.3 सेकंड में होगा, वो होगा टोटल 0.4 सेकंड. अभी ये टोटल कार्डियक डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट विल टेक 0.4 सेकंड. ओके, सो ये एक साइकिल इसमें होता है. फिर से अगेन दूसरा साइकिल चल होता है, अगेन तीसरा ऐसा. ओके, नाउ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. Okay, so if you try to record the electric activity of your heart on a using a electrodes on a paper, that is known as electrocardiogram. Okay, so it will show you typically your electrogram or typical ECG will show you these kind of waves: P, Q, R, S, T. P will be short, Q, S, T will be complex, and T will be again short. Okay, so that is because of the P wave is because of the impulse from SA node. So whatever impulse is generated, that will be shown by P wave. Okay, so that is arterial contraction. Then arterial depolarization, sinus rhythm, that is responsible for the arterial depolarization and sinus rhythm, P wave. Okay, if there is generation of impulse in the SA node, that impulse will cause contraction of your atrium. Okay, then QRAS complex, that is because of the ventricular contraction, that is because of the rapid spread of impulse through AV bundle and bundle of his Purkinje fiber, and after depolarization of your ventricles, that is ventricular contraction. Then T wave, ventricular repolarization means ventricular relaxation. Then now you can see here it is your heart. Okay, so here in this area it will be right atrium or right auricle. Okay, auricle means there are 4 chambers in the heart. Okay, so those chambers are known as a auricle and ventricle. Okay, so auricle will be above and ventricle will be below. Okay, जो above यहाँ पे जो होगा वो auricle होगा या फिर atrium होगा. So it is right atrium, it is a right ventricle. Okay, so here it is a left auricle or left atrium, and here it is a left ventricle. Okay, so अभी इसका जो मस्कुलर लेयर है वो भी डिफरेंट है. सो एट्रियम में जो मस्कुलर लेयर है वो थोड़ा सा कम ही होता है, बिकॉज एट्रिया हैज टू जस्ट पंप द ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल. ओके, विद द ग्रेविटी. ओके, एंड व्हेन दे आर पंपिंग द ब्लड at that time the valves are open, so they don't have to work much. That's why they have less muscular wall. Okay, again in the ventricles you can find a thick muscular wall. Okay, myocardium, because they have to pump the blood against the gravity, and they have to pump to open the valve also, so they have to work very hard. So that's why the pressure of atrium, pressure of blood at the atrium will be very less, and pressure of blood at the ventricles will be very high. Okay, so now this is known as your superior vena cava, this one is known as inferior vena cava, and this one is known as aorta. Okay, so whatever blood vessel they are shown in the red color, they are arteries. Whatever they are shown in the blue color, they are veins. Okay, now so this is a vein. Okay, so this is a pulmonary vein. Okay, so it has 2 branches, left and right. So these 2 branches will go to the lungs. Okay, now what is the sequence of blood flow in the heart? Now
whatever blood is collected by these veins, that will be drained into right atrium. Okay, so right atrium, after the contraction of atrium, so right atrium will drain blood into right ventricle. Now from the right ventricle blood will go to the pulmonary, to the lungs. ठीक है, so there will be purification of blood. now जो लेफ्ट साइड, ये जो राइट साइड है आपका, यहाँ पे जो वेनस रिटर्न हो गया तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है. ठीक है, ये जो है ना राइट साइड का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है. ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड का ब्लड है तो उसको ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो वो राइट वेंट्रिकल जो है वहां से आपका जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स में जाएगा, वहां प्यूरिफिकेशन होगा, वहां पे एक्सचेंज होगा, वहां पे ऑक्सीजन डाला जाएगा उसमें, और वो ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा डायरेक्टली. कहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आएगा वो ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग होने के बाद वो जाएगा ब्लड आवर्टा में. So this is how blood circulation in the heart, blood flow of blood in the heart. Okay, so उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, so be careful about that. Okay, so there is one artery known as the artery which supplies the blood to the heart, that is known as a coronary artery. Okay, so ये जो arteries होते हैं, so arteries which will supply the blood to a heart only, myocardium of heart. Okay, so right coronary artery, this is the right coronary artery छोटी वाली, or this is the left coronary artery. So coronary artery will supply blood to a heart itself. ठीक है, और बाकी के जो arteries वेन है वो बाकी पार्ट को सप्लाई करेंगे. तो इतना याद रखो, coronary artery will supply the blood to a heart only, myocardium of heart. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. And coronary veins will drain blood from myocardium to the heart only. Okay, so if there is a blockage of this coronary artery, you will suffer many problems like angina pectoris, then congestive cardiac failure, myocardial infarction and all that. Okay, because of only this coronary blockage. If there is increase in cholesterol level, so there will be decrease in the lumen of your coronary artery. As coronary artery is very small, so its lumen, if there is a small blockage in this area, that will block the blood supply to the heart. Okay, just overall again we will see deep anatomy of heart. So heart will have three layers: pericardium, myocardium and endocardium. So pericardium is nothing but the serous membrane. It is an elastic membrane, it is an elastic sac, it has a two membrane, it has a two layer, and in between two layer there is a serous membrane which consists of a serous fluid known as a pericardial fluid. Okay, that will act as a shock absorber and that will prevent the heart from over distension. Then myocardial, that is a middle vascular layer of heart. Okay, स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स आर देयर. जो यहाँ के मायोकार्डियल के मसल होता है वो अलग होता है और स्केलेटल मसल जो है वो अलग होता है, क्योंकि मायोकार्डियल मसल में क्या होता है, एक में के साथ कॉम्बिनेशन होता है उनका, एक में के साथ कनेक्शन होता है. मतलब आप अगर आपने मायोकार्डियल, इफ देयर इज अ स्टिमुलस ऑफ सिंगल मायोकार्डियल सेल, सो मायोकार्डियल मसल हैज एबिलिटी to transfer that impulse from all over the myocardium. Okay, because they have patches over there, so that is a specialty of myocardium. So that is a heart muscle, it is a muscular layer in the heart. Then endocardium is the inner layer of heart. Okay, inner lining of heart. Okay, they are very smooth, because they have to handle the blood. So if there is a rough, if it is rough, then there will be blood clotting. So it is a very smooth to prevent the blood clotting, endocardium. Okay, then again, so your heart has a 4 chambers, remember. Okay, and remember once again, your heart is a double pump. It is not a single pump, it is a double pump, because blood is pumped from the heart in two different ventricles. Okay, so your right ventricle also able to pump the blood, your left ventricle also be able to pump the blood. Okay, and it will pump again at the same time it will pull out the blood. Okay, जो पंप किया वाला ब्लड है वो तो सर्कुलेशन में जाएगा आपके बॉडी पार्ट को, लेकिन उसके उसी समय पे आपका ब्लड पुल भी किया जाएगा from the peripheral tissues. So that's why heart is a double pump. Remember, double pump. There are different valves present in the heart. Okay, जैसे मैंने बोला है कि
आपका आर्टरिया है, वेंट्रिकल्स है, ये दोनों के बीच में एक वॉल होता है। ओके, जैसे आपका आर्टरिया, जैसे वेंट्रिकल है आपका, उसके बाद में आवर्टा है, उसके बीच में एक वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे आपका राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, उसके बीच में एक वॉल्व होता है। ठीक है, so there are different valve, there are total two pairs of valves present in the heart. Okay, two pairs means four valves present in the heart. Okay, so that is a first one is a tricuspid valve. First one is a tricuspid valve. So tricuspid means there will be three flips or three cups in the valve. Okay, so it is also known as atrioventricular valve, and that used to prevent the backflow of blood from right ventricle to the right auricle. ट्राइकस्पिड वॉल्व ये होता है आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है। ठीक है, और ये इसका काम क्या है कि मान लीजिए कि राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया, वो आएगा, वो उसको नीचे लाके देखा, इसको वेंट्रिकल को, अब वेंट्रिकल अगर कांटेक्ट होगा तो वो फिर से ऑरिकल में न जाए। ओके, सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, when ventricle will be contract, the valves will be closed, valve will be closed, and after contraction the blood will go into the pulmonary artery, right? So that is the function of your tricuspid valve. So it is a right atrioventricular valve, prevent the backflow of blood from right ventricle to right auricle and right ventricles when the right ventricle contracts. Okay, tricuspid valve. Then again there is a bicuspid valve, okay, or mitral valve. Then again there is another one, mitral valve. Okay, so that is present in the left atrium and left ventricle. Again same function to prevent the backflow of blood from left auricle to the left ventricle to the left. Pulmonary semilunar valve. Pulmonary semilunar valve कहाँ पे होगा? As the name indicates, pulmonary semilunar valve. So it is present in the pulmonary artery. So it is present in the pulmonary artery to prevent the backflow of blood from artery to the right ventricle. Okay, so right ventricle में जब pumping होता है तो right ventricle का blood कहाँ जाएगा आपका? pulmonary artery में. Again उसका back flow ना हो इसलिए pulmonary semilunar valve वहाँ पे रहता है. aortic semilunar valve पे रहता है. जैसे मैंने बोला है कि आप लेफ्ट वेंट्रिकल जब आप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाद में जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? अओर्टा में जाएगा. सो वंस तो वहां पे भी एक वाल्व होता है. ठीक है, तो वो वाल्व क्या करेगा? दैट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अओर्टा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करने के लिए वाल्व होते हैं आपके हार्ट में. तो कौन सा वाल्व है, कितना वाल्व है, ये इतना याद रखो. सो देयर आर 4 वाल्व्स इन द हार्ट. Okay, so first one is a tricuspid valve. It is also known as a atrioventricular valve. Okay, that is present in the right atrium and right ventricle between. Okay, then second one is a bicuspid valve, or that is known as a mitral valve. Okay, that is known as a mitral valve. That is present between left ventricle and left atrium. Okay, again there is a pulmonary semilunar valves. So that are present in the right atrium, right ventricle to the your pulmonary artery in between these two. And there is another valve known as a aortic valve, aortic semilunar valve. So that is present between left ventricle and your aorta. Is that clear? So this is how. And then you know that right atrium where it is, left atrium where it is, right ventricle where it is, and left ventricle I have told you. So इतना याद रखो कि एट्रियम और ऑरिकल्स में जो लेयर होता है वो कम होता है. बिकॉज सी एट्रियम जो होता है उसका प्रेशर कम हैंडल करना पड़ता है, और वेंट्रिकल जो होता है उसको प्रेशर ज्यादा हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसको फोर्सफुली पूरा टिश्यू में ब्लड भेजना है, और उसको वो ब्लड का जो फोर्स है उतना होना चाहिए कि वॉल्व भी ओपन हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, मस्कुलर वॉल, वो ज्यादा थिक होता है as compared to auricles. Okay, so depending upon the workload, so your auricles and ventricles will have a different thickness of your myocardium. Heart sound. Okay, heart sounds. So if you try to listen your heart sound, so there is a specific sound known as lub dub, lub and dub, lub dub, lub dub. So whatever is beating is there. So that beating is nothing but the lub dub sound. Okay, so lub sound is because of the due to the closure of atrioventricular valve. ठीक है,
means lub sound is due to the ventricular right ventricular contraction, right ventricular contraction. Okay, lub sound is because of right ventricular contraction, or it is because of the closure of atrioventricular valve. Dub sound is softer due to its due to the closure of aortic and pulmonary valves. Okay, जैसे ही आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपके दोनों जो वॉल्व्स है, ठीक है, ये आर्टिकुलर वाल्व जो है वो क्लोज होगा ना, तो उसका लब आवाज आएगा, लब साउंड आएगा। और जो डब साउंड है वो दैट इज अ लिटिल बिट सॉफ्टर साउंड, लाउड साउंड जो होता है लब होता है, डब थोड़ा सा कम होता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ aortic and pulmonary valve. इतना important. Now heart rate. Okay, so heart rate means what? The beating of heart per minute, that is the heart rate. So normally your heart beats at a 60 to 80 beats per minute. Okay, and who decide the heartbeat? Your SN node will decide the heartbeats. So it will generate impulse 60 to 80 impulse per minute, and that is nothing but the your heart rate, contraction of your heart, contraction relationship. Okay, so it is also known as the pulse. आपका जो पल्स है वो पल्स कितना है, 70 to 80 होता है, 60 to 80. Okay, so it varies, it is just a range, it will vary. Generally SN node propagated through conduction pathway. Okay, so SN node will generate impulse, it will transfer to AV node, and that AV node will transfer that impulse to a whole muscular part of your heart, so it will contract. So SN node will generate 60 to 80 impulses per minute, and that is nothing but the 60 to 80 beats per minute. Okay, so heartbeats normally 72 beats per minute. Abnormal heartbeat is known as a arrhythmia. Okay, so now it is a rhythm. What is the rhythm? 60 to 80 beats per minute is the rhythm. नॉर्मली आपका हार्ट बीट होता है 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो ये इम्पल्स इतना जनरेट होता है 60 से लेकर 80 तक इम्पल्स जनरेट करता है ये से नोड. ठीक है, आपका हार्ट बीट वहां पे आता है 72, ये भी कम ज्यादा हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर abnormal heart rate is known as a arrhythmia. Okay, arrhythmia, and that's why antiarrhythmic drugs are used to correct the disturbed rhythm of your heart. Okay, now another term, it is very important, cardiac output. Okay, there was a question in GPAT 19 on this. Okay, so what is cardiac output? What is the formula for cardiac output? So cardiac output means the amount of blood ejected from heart per beat, that is known as a cardiac output. Okay, so cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Now what is stroke volume? So it is nothing but the ml of blood that is expelled from the each ventricular contraction, that is nothing but the stroke volume. So cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Heart rate is normal, that is 72. Okay, and stroke volume is normally 65 to 70 ml approximately. Okay, so just take a 70 ml approximately. So 70 that is your stroke volume, and 72 is your heart rate. So if you multiply these two, so you will get stroke volume is a 5 to 6 liters per minute. Means 5 to 6 liter of blood per minute is ejected from your cardiac output is 70 into like 70 into 72, 70 ml into 72 heartbeat और 70 हार्टबीट आप कितना भी ले लो तो उतना आएगा 4900 अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर. सो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट होता है. और स्ट्रोक वॉल्यूम इटसेल्फ इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइड बाय पल्स. ये दो फॉर्मूले है स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय पल्स. कार्डियक आउटपुट कितना है टोटल आपका 5 लीटर डिवाइड बाय आपका पल्स कितना होता है 50 to 60 पल्स होता है. ठीक है, तो अगेन उतना आएगा 100 ml, मतलब ये प्लस माइनस है. ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं आता है उतना स्ट्रोक वॉल्यूम को ये फॉर्मूला, बट कार्डियक आउटपुट का याद रखो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज नथिंग बट द कार्डियक आउटपुट. ओके, एंड व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? द अमाउंट ऑफ ब्लड ejected by the heart per unit time, that is nothing but the heart rate, cardiac output. Okay, again due to exercise stroke volume will increase as the venous rate increases and stretches the myocardium.
अभी जो कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज कर रहा है मतलब उसका मसल ज़्यादा वर्क कर रहा है। ओके, सो एक्सरसाइज की वजह से क्या हो रहा है कि वेनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। वेनस रिटर्न ज़्यादा हो रहा है तो आपका जो है जो फीलिंग ऑफ हर्ट है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है तो ज़्यादा ब्लड ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो वो ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में तो वो क्या करेगा, दैट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन योर ventricle. Okay, that will stretch your ventricle, and because of that stretching, ventricle again forcefully contract. Okay, so due to exercise stroke volume increases, that will increase the stroke volume, and venous return as the venous return is increased, that's why stroke volume will be increased, and it will stretch your myocardium, and that's why myocardium will again forcefully contract the ventricles and टू पुल द ब्लड। ओके, जो भी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ज्यादा निकल जाएंगे वहां से। तो इट इज जस्ट लाइक ऑटो रेगुलेशन। आप देखो अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम आ गया, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम आ गया तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका कम आ जाएगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो इट इज जस्ट ऑटोनॉमी। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आप कोई ब्रेन नहीं कंट्रोल कर रहा है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है कौन? myocardium, and that's why it has some sort of autonomy, and this law was observed by one scientist known as Stirling's law. Okay, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है स्टर्लिंग्स लॉ, ये बाद में फिर से अपन देखेंगे नीचे। नाउ इजेक्शन फ्रैक्शन, we are not saying each and everything about the cardiovascular system, we are just saying whatever is important. So ejection fraction or and cardiac reserve, so normal ejection fraction is about 60 to 70। जितना ब्लड होता है उसमें 60 to 70 इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब उतना बाहर निकल जाता है। दैट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड विद इन द वेंट्रिकल दैट इज पंप्ड आउट पर यूनिट बीट। व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? अमाउंट ऑफ ब्लड विद इन द वेंट्रिकल दैट इज टू बी पंप्ड आउट पर बीट, दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज 60 to 70%। ओके, नाउ नॉर्मल कार्डियक रिजर्व is 15 liters or more. It's difference between resting cardiac output and maximum output during exercise। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पे जितना कार्डियक आउटपुट होता है उसका, और रेस्टिंग जब रेस्ट कर रहे हो उसके बाद में कितना कार्डियक आउटपुट है उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कार्डियक रिजर्व। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? सो इट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल बिफोर दे कैन कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इट इज आल्सो नोन एज ventricular end diastolic volume और it is known as a stroke volume। ओके, जो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के पहले कितना ब्लड है, ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नथिंग बट द स्ट्रोक वॉल्यूम और इट इज आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रीलोड। ओके, दिस प्रीलोड आफ्टर लोड टर्म्स you will encounter in the antiarrhythmic chart। now arterial pressure, what do you mean by arterial pressure? So arterial pressure is also a stroke volume। Okay, it also affect the stroke volume। Arterial blood pressure will also affect the stroke volume, and arterial pressure will resist to the blood। Okay, it will cause a resistance to the blood being pumped। Okay, so arterial pressure is opposing the blood flow। Okay, if there is a more arterial pressure, so there will be decrease in the stroke volume। Now blood pressure, what is blood pressure? Blood pressure is nothing but the pressure exerted by blood on the wall of arteries, that is the blood pressure। Now how it is calculated? Remember, it is very important, cardiac output into peripheral resistance, that is nothing but the blood pressure। So blood pressure is nothing but the cardiac output into peripheral resistance। Now blood pressure is increased by exercise body, then increase in temperature। Okay, so what is normal value of blood pressure? 120 to 80, 120 divided by 80 mm of Hg, 120 by 80 mm of Hg, millimeter of mercury millimeter। Okay, so 120 बटा 80 millimeter of mercury, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। एक्चुअली अगेन इट इज अ रेंज, ठीक है, तो हर एक में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ये तो सबको मालूम है कि 120 by 80 mm of Hg ब्लड प्रेशर होता है, सबको मालूम होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले इतने बेवकूफ नहीं होते, तो वो ऐसा नहीं पूछते। वो क्या पूछते? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, और वहां पे आपको ये वैल्यू नहीं आएगा 120 mm जी, ये वैल्यू देंगे ही नहीं, क्योंकि मालूम है तो 120 80 सबको मालूम है।
आजकल तो बच्चों को भी मालूम है, नॉर्मल छोटे छोटे बच्चों को, तो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये 16/11 किलो पास्कल. So they will ask you what is the normal blood pressure, and they will give options like this: 16/11 kilopascal, then 15/10, likewise that. So you have to remember these values. Okay, 16/11 kilopascal. ये already pharmacist के exam में पूछा था इसको. ये तो सबको मालूम होता है ना, 120/80. Now out of these, 120 is nothing but the systolic blood pressure, and 80 is nothing but the diastolic blood pressure. Now, to measure the blood pressure, there is one instrument known as a sphygmomanometer. Okay. So if there is a increase in the blood pressure more than the normal, that is known as a hypertension. And if it is decreased in the blood pressure than normal, it is known as a hypotension. So blood pressure less than normal is a hypotension. Blood pressure more than normal is a hypertension. Both are the disorder of blood pressure. Okay. So whenever we will see antihypertensive drug, so mostly we will see drug which will decrease the blood pressure. This blood pressure is controlled by different mechanism. So what are the different mechanism to control the blood pressure? So short-term control on the basis of movement involved in the baroreceptor reflexes, and also chemoreceptor and circulating hormones. Now this blood pressure is controlled by three. First one is the baroreceptor, second one is the chemoreceptors, and the third one is circulating hormones. Now what is my baroreceptor? So baroreceptor जो आपका aorta होता है, जो हार्ट में जो aorta होता है, that is the largest vein, largest artery. aorta में जो मिडल लेयर होता है, मस्कुलर लेयर, वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर. Okay, so there is a pressure sensitive receptor present in the aorta of your heart, and that is known as a baroreceptor. Okay, that is known as a baroreceptor, and okay, that will keep an eye on the pressure. That will keep an eye on the pressure. If it is less than normal, they will give signal to your brain. Okay, if it is more than normal, again they will give you signal to your brain. Okay, so then brain will analyze that signal, and it will increase sympathetic outflow or parasympathetic outflow depending upon the signal. अगर वहाँ पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो भी सिग्नल भेजेगा. अगर मान लीजिए कि आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो वहाँ पे सिग्नल भेजेगा, और वहाँ से क्या होगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, मतलब नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाएगा, और आपका हार्ट का मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, देन रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. तो मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है, तो बैरोरेसेप्टर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा आपको ब्रेन को, सो टू इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो. सो अगेन सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज होगा, मतलब नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा, वो जाके ब्लड वेसल पे एक्ट होगा, वो जाके हार्ट पे एक्ट होगा, और दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, सो दैट इज द baroreceptor. Now second one is the chemoreceptor. As the name indicate, chemo means what? Chemicals. Chemoreceptor. So these are the kind of receptor, they are sensitive to the chemical changes. For example, your carbon dioxide and oxygen. If there is an increase in the carbon dioxide level of your body, of your blood, the chemoreceptor will be activated. They will send the signal to heart, to signal to your brain, and they will increase the heart rate. हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे. अगर आपका बॉडी का ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया तो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे हो जाए, लंग्स को हो जाए, और वहाँ पे एक्सचेंज हो जाए. ऐसा अगर कम हो गया तो सेम अल्टीमेटली वो अलग. देन सर्कुलेटिंग हार्मोन्स मींस लाइक वैसोप्रेसिन इज देयर, वैसोप्रेसिन एंटीडायोटिक हार्मोन, ठीक है, एंटीडायोटिक हार्मोन. देन एंजियोटेंसिन, ये जो है ये कुछ हार्मोन्स है, they will also control your blood pressure. For example, if there is a decrease in blood pressure, means blood pressure decrease होगा तो आपकी किडनी को भी ब्लड कम जाएगा. किडनी को ब्लड कम गया तो किडनी will release renin, one enzyme known as renin. Okay, that renin will increase the blood pressure. That renin will stimulate adrenal medulla to release adrenaline, noradrenaline. अगर adrenaline noradrenaline release होने के बाद वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे. उसके बाद में फिर से रेनिन का कन्वर्जन होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में. तो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है इटसेल्फ इट इज अ वैसोप्रेसर, ये भी आपका ब्लड वेसल को कंप्रेस करेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. ऐसा, ठीक है. अगर ये उसके बाद में आपका जो होता है, जैसे मैंने बोला है क्या, जो रेनिन हो गया आपका एंटीडायोटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन. ओके, अगेन if there is a decrease in blood pressure, vasopressin will be released by the kidney. Okay, एंटीडायोटिक हार्मोन,
antidiuretic hormone will come in picture. Antidiuretic, as the name indicates, it is an antidiuretic, means it will decrease the urine formation and then it will increase the वॉल्यूम ऑफ ब्लड. अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो ऐसा मतलब ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय these three. Are you getting or not? Yes. Okay, so I have explained about this, the baroreceptor and control of blood pressure. So control of blood pressure, so short term control on the basis of movements involved in the baroreceptor reflexes and also chemoreceptor and circulating hormones. Okay, the long term control involves the regulation of blood volume by kidney and renin, angiotensin, aldosterone system. Okay, then baroreceptor, chemoreceptor मैंने बोला है. So baroreceptor are also known as a pressure receptor. Remember, baroreceptor, they are known as a pressure receptor and they are situated in your aorta. Okay, wall of aorta and carotid sinus. Blood pressure is the blood pressure disturbed by movement. Okay, तो उसके लिए वो सेंसिटिव होता है. केमोरेसेप्टर मैंने बोला ऑक्सीजन एंड उसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेंज हो गया नॉर्मल से तो केमोरेसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा अगेन वो दैट विल गिव सिग्नल टू हायर सेंटर लाइक टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर एंड हाइपोथैलेमस. उसके बाद में फिर से वो वहाँ पे वही होगा. पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम right ventricle to the pulmonary artery and in the alveoli there will be exchange of gases and then pulmonary vein will drain the pure blood to the left atrium. Okay, that is known as the pulmonary circulation. Okay, and pulmonary pressure is nothing but the 20 mm of Hg. Okay, so if there is a increase in the pressure, okay, more than 25 mm of Hg in the pulmonary circulation, that is known as a pulmonary edema. Now control of heart and blood pressure. So cardiac center present in the medulla oblongata will, it is stimulatory and inhibitory center which will control your heart rate and blood pressure. How? By increasing or decreasing the parasympathetic vagus nerve, okay, flow the vagus nerve flow. Okay, तो आपने देखा है कि sympathetic nervous system stimulation will increase the heart rate, blood pressure. Parasympathetic will decrease the blood pressure and heart rate. Again, blood flow through heart. Okay, so this is a superior vena cava, this is inferior vena cava. So inferior vena cava is the largest vein, so it will drain all the blood from tissues from below the trunk. आपके thoracic cage के नीचे जितने भी पार्ट्स है उससे ब्लड ड्रेन करेंगे कौन? इंफीरियर वेना कवा. ठीक है, और सुपीरियर वेना कवा जो आपका थोरेसिक केज है, हेड है आपका, जो नेक है वहां का एरिया का ब्लड कौन करेगा ड्रेन? सुपीरियर वेना कवा. ओके, सो these two are the major veins that will collect the blood from body part. Okay, so which blood is having low concentration of oxygen and high concentration of carbon dioxide, that is known as a venous blood. That will be collected and that will be drained into right atrium, right auricle, right atrium. Okay, so now that from right atrium blood will be pumped to right ventricle. Okay, now from right ventricle blood will be pumped from right ventricle to pulmonary artery that will supply blood to lungs, where in the lungs alveoli part of lungs will cause exchange of gases. So carbon dioxide will be released and oxygen will be taken up in the blood, and that blood will be again drained by pulmonary vein into left atrium. Okay, left atrium will drain its content into left ventricle, and then left ventricle will pump the blood into aorta, and aorta will carry blood to various part of body. Okay, so aortic blood, that is known as a pure blood or oxygenated blood. यहाँ पे जो है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा. बट वेनस ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. ना आपको जो सिस्टम बोला है ये सब इतना स्लोली नहीं होता और ये सब इंडिविजुअल नहीं होता. ये सब ऑरिकल्स जो एट्रियम से दे विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. ये ऑरिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये इंडिविजुअली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते. ये ऑरिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते, ये वेंट्रिकल्स साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते. मान लीजिए कि वेनस ड्रेन आ गया यहाँ पे, ओके, और यहाँ से भी वेनस ड्रेन आ गया, यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया, यहाँ पे इनप्योर ब्लड आ गया.
अभी जो atrium है और auricles है, they will contract, they will drain their blood into respective ventricles. Okay? अभी ये इसमें से आ गया है, ये इसमें से आ गया है. अभी ये प्योर ब्लड है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए. ये क्या करेगा, ये लंग्स को ब्लड भेजेगा. राइट वेंट्रिकल विल सेंड ब्लड टू ए लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड ब्लड टू ए various body parts. Okay, so the contraction of artery, they are in simultaneous contract, they will contract simultaneously, and ventricles will also contract simultaneously. Okay, so this is how there is a blood flow. Now circulation of blood from right ventricle to the pulmonary, that is known as a pulmonary circulation or minor circulation, and circulation of blood from left ventricle to a various body parts, that is known as a major circulation or systemic circulation. Now disorders of arteries. जो आर्टरीज की कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मीन्स जो आर्टरी का जो इनर वॉल होता है, इंटीमा. सो इन द इंटीमा वॉल ऑफ योर आर्टरीज, so there is a deposition of cholesterol and all that. Okay, cholesterol and low density lipoprotein and all that. So there will be a hardening of that wall. There will be a hardening of that wall. So if there is a hardening or there is deposition, there will be decrease in the blood flow. So that is nothing but the arteriosclerosis, hardening of inner wall of your artery. Okay, and because of that hardening, arteries will lose their elasticity. जो elasticity होता है उनका contact होने का, relax होने का जो काम है, वो उसका loss हो जाएगा. तो that's why they will lose their elasticity. And what is the, because arteries, they have a thick muscular layer to for what, to elastic, because they should contract and relax. And अगर अंदर का जो inner layer है उसका deposition हो गया उसमें फैट्स का और कोलेस्ट्रॉल का, तो उसमें क्या हो गया, उसका हार्डनिंग हो गया और वो इलास्टिक नहीं रहेगा, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो दे आर इलास्टिक इन नेचर. नॉर्मली दे आर इलास्टिक इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन दे विल लॉस देयर इलास्टिसिटी. दैट इज नोन एज आर्थरियोस्क्लेरोसिस. एंड फॉर दैट यू हैव टू रिमूव दैट ब्लॉकिंग. जो होता है ना, आपने सुना होगा कि आपके दादा, आपके कोई रिलेटिव, उनके हार्ट में ब्लॉक हो गया, उनके ब्लॉक कितना परसेंट, 18%, 20%, तो उसमें क्या करते हैं, फिर स्टेंट डालते हैं, स्टेंट डाल के वो जो ब्लॉकिंग है वो रिमूव करते हैं. तो दैट इज आर्थरियोस्क्लेरोसिस. मतलब ये कॉमन टर्म है आर्टरी के बारे में. अगर ये कोरोनरी आर्टरी को हो गया तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है. नाउ सेकंड टर्म इज एन्यूरिज्म. So this was again a question in GPAT 2019. So what do you mean by aneurysm? So a weak portion of arterial wall may bulge out, forming a sac or bubble called as aneurysm. मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आपका ब्लड वेसल स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट ब्लड वेसल हो गया आपका, तो उसमें मतलब ये नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल का एक वीक पोर्शन जो है, तो वीक पोर्शन वो ट्विस्ट हो जाता है. थोड़ा ट्विस्ट होने के बाद वो सैक लाइक स्ट्रक्चर और बबल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाता है, और जो ब्लड है, ब्लड स्मूथ फ्लो होने के बजाय वो आपको उसको एक टर्न लेके फिर जाना पड़ता है. दैट इज नोन एज एन्यूरिज्म. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन इन GPAT 20. ये जैसे लाइन है वैसे ही लाइन पूछा था और नीचे ऑप्शन में एन्यूरिज्म था. एन्यूरिज्म इज द आंसर. वीक पोर्शन ऑफ आर्टेरियल वॉल में bulge out, forming a sac or bubble called as aneurysm. So arteriosclerosis is one of the cause of aneurysm. अगर arteriosclerosis हो गया आपको तो मे बी aneurysm भी हो सकता है. Then most common cause of coronary artery disease is nothing but the arteriosclerosis. जो जितने भी coronary artery disease होते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी करना पड़ता है किसी को क्योंकि उनका coronary artery में ब्लॉक हो जाता है, that is because of arteriosclerosis. Now disorders of veins. First one is the phlebitis. So इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन 2008 में आया था. Phlebitis means inflammation of vein. Okay, and that mostly occurs with the intravenous injection. अगर आप intravenous injection दिए तो आपका injection मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है intravenous injection. So you have to inject your content inside the vein. So during injection you have to rupture the wall of vein. So you have to rupture the vein, and after withdrawing the injection, what happens? So there will be a smaller clot inside that ruptured wall of your
vein, and over there is a clot and there is some inflammation. Okay, and because of that inflammation there will be local pain and all that inflammation and local pain. That is nothing but the phlebitis. And there was a question in 2018: phlebitis is the major problem associated with which route of drug administration? And there was a different option like intramuscular injection, intrathecal injection, intravenous injection. So there was a intravenous injection. Okay, answer was intravenous. So phlebitis is a problem associated with the intravenous injection. Varicose vein, another disorder of your arteries, and vein, another disorder of your veins, varicose vein. So what happens in this swollen and distended veins? Swollen and distended veins that occurs most often in the superficial veins of legs. People must sit who must sit and or stand on the place one place for longer period, so they develop usually varicose vein. Varicose vein is the main cause for these veins may cause discomfort and cramping in the legs, and or become more painful even. Severe varicosities may removed by surgically. इसके बारे में बोलते हैं वेरिकोस वेन के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई एज्ड एज्ड है, कोई आपके दादा है या फिर कोई दादी है। कभी कभी क्या होता है उनका जो घुटना है, घुटने के पीछे का जो एरिया है, वो आके जो वेन्स होते हैं वो देखो ऐसा स्पाइरल वेन्स होते हैं उनके। बट नॉर्मली वेन शुड नॉट बी दैट स्पाइरल एंड डिस्टेंस्ड, दैट शुड नॉट बी स्वोलन। ओके, नॉर्मली वेन नहीं दिखता है आपके पैर में। आपने अगर देखा घुटने के पीछे है आपके तो वेन नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो एज जिनका बहुत ज्यादा उम्र है, एजड पेशेंट जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है कभी कभी कि उनके वेन पूरे दिख जाते हैं आपको ब्लू कलर के और स्पाइरल वेन। सो दैट इज नथिंग बट द वेरिकोस वेन। ओके, सो swollen and distended vein that occurs most in the superficial veins of legs, that is nothing but the varicose vein. That is known as varicose vein. Okay, so those people who are having a desk job or who used to sit at a place for a long time, or those patients who used to stand for a long time, so they have a chance to develop a varicose vein. Okay, so varicose vein, they may cause discomfort and pain in the lower legs, and even they become more powerful as there is more development. Okay, so in that case severe varicosities you have to be you have to remove by surgical methods. Hemorrhoids means what? Hemorrhoids means which is the result of because of pregnancy or chronic constipation and straining to defecate. It causes discomfort, pain, and they can be removed by surgically. Now what happens? Hemorrhoids means what? So whatever is your anus part, जो आपका डिफेक्शन का जो लास्ट, दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव एनस. ओके, सो इन द एनल रीजन व्हाट हैपेंस, the veins in the anal region, they gets ruptured because of pregnancy or because of chronic constipation. अगर आप if you don't have regular bowel habits, then in that case you have a chance to develop hemorrhoids. Okay, hemorrhoids means it is a type of pile. पाइल्स जो होता है उसका टाइप होता है हेमोरेज. ठीक है, तो जब आपको टॉयलेट में जाते हो तो कभी कभी ब्लड भी आ जाता है आपका टॉयलेट में. क्यों? बिकॉज ऑफ हेमोराइड्स. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेनिंग टू डिफेकेट, एंड बिकॉज ऑफ लार्ज stools, chronic constipation, pregnancy, so sometimes there is a rupture of veins present in the anal area, that is nothing but the hemorrhoids. Okay, so it will also cause a lot of pain and discomfort. They can be removed by surgically. Again, surgical procedure is required. Then what do you mean by thrombosis? If there is a clotting of blood inside the blood vessel, that is nothing but the thrombus. Okay, that is called as thrombus or thrombus, blood clot in the blood vessel, thrombus. Okay, and then what is mean by embolism? So blocking of blood vessel by that clot. Okay, or any mass of another like deposition, that is known as embolism. What is mean by thromboembolism? Movement of that thrombus inside the blood vessel is known as thromboembolism. जो हार्ट है आपका उसका कितना डिसीज होता है. ओके, सो arterial septal defect known as a hole in the heart. Okay, so it is a genetic disease, और most of the children जो होते हैं कि इसके दिल में छेद है. मतलब क्या? arterial septal defect means
आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट मीन्स वो क्या होता है, उसमें जो सेप्टम होता है डिवाइड करता है एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, वो डिफेक्ट होता है वहाँ पे सेप्टम में. सो दैट इज नोन एज आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, और जनरली इन द कॉमन टर्म इट इज नोन एज होल इन द हार्ट. उसके दिल में छेद है वो एक होता है. उसके बाद में Fallot's tetralogy. Fallot's tetralogy. It is also congenital or genetic disease, cardiac abnormalities of the four combination. Okay, so Fallot tetralogy is a combination of four different abnormalities. That is nothing but the stenosis. Stenosis means blockage. Okay, stenosis means blockage. Then ventricular septal defect. Then ventricular septal defect means दो वेंट्रिकल अलग अलग है ना, तो उनमें अलग अलग नहीं होते वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. इन आवर्टिक मिसप्लेसमेंट एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. जो आवर्टिक मिसप्लेसमेंट में आवर्टिक वाल्व जो होता है वो गलत जगह पे लग गया तो उसको बोलते हैं आवर्टिक मिसप्लेसमेंट. एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. सो पैलट टेट्रोलॉजी, जस्ट रिमेंबर इट्स अ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट, कि आपका बचपन से ही मतलब जन्म लेने से ही आपका वैसा ही रहेगा. ठीक है. Then there is another one, rheumatic heart disease. It is not actually a heart disease. It is a disease because of another reason. Okay. So rheumatic fever is an inflammatory illness that sometimes follow the subtropical throat infection, most commonly in children and youngs, and it is an autoimmune disorder. It is also produced to combat the original intent. Due to this rheumatic heart disease, if there is infection of heart, and that there is known as a rheumatic heart type disease. Sequence of blood flow in the heart. Okay, so we have seen this again. So again, blood will receive from upper and lower part of your body, from superior and inferior vena cava. Okay, and it will get collected into right atrium or right auricle. The tricuspid valve will open, or tricuspid valve or atrioventricular valve will prevent the backflow of blood from the right ventricle to the right atrium. Okay, when ventricular contraction is there.